CSR is going through a huge transition in our country, and in this evolving landscape, not only the corporates, but मेरा ख्याल है कि NGOs भी बहुत हद तक evolve हो रहे हैं. And when I say that, I mean it is not actually the same condition as it was a decade back. A lot of grassroots organizations today, they are building their capacity. Corporates are building their capacity because of structured resources that they are getting to enhance and take bigger programs. So I think ये अपने आप में एक बहुत बड़ा milestone है कि जिस रास्ते पर जा रहे हैं तो वहाँ पे corporates भी NGOs को mentor कर रहे हैं. They are helping them in building the capacity. Which I feel should be more structured, and there should be more collaboration in a very responsible manner. क्योंकि बहुत सारे आपने genuineness की बात की that how can we segregate between genuine and eligible NGOs. I feel these are not interchangeable terms, because बहुत सारे genuine organizations लोग grassroots पे काम कर रही हैं, just because they are not eligible, they do not have proper records, they are not eligible to take CSR resources. So इस gap को corporates की मदद से कितना ज़्यादा bridge किया जा सकता है. For example, at Sterlite Tech, we are working a lot with grassroots organizations, and every month we are having their capacity building sessions. We have also used technology a lot, because एक बड़ी समस्या जो NGOs के साथ हमने देखी है वो है they are not using the technology to measure impact. So, and most of the corporates are, of course, because of the law and other things, are using these apps and other portals. So if this can also be extended to NGOs, I think ये बहुत बड़ी मदद होगी to really get the real outcome of it. आई थिंक देखिए एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी जिसमें आई थिंक ये डेटा एनालाइज हुआ था कि किस एरिया में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट CSR का आ रहा है. एंड आई थिंक मिनिस्ट्री भी इस डेटा एनालिसिस में काफ़ी काम कर रही है. बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज का सवाल उठाया था अभी, कि हर कॉर्पोरेट इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर रहा है व्हाट डू वी हैव टू डू इन CSR, एंड दे आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग इट. इससे ठीक है कुछ फ्रैगमेंट्स में पीस मील्स में काम हो रहा है, लेकिन अगर द कम्युनिटी नीड ऑफ वन पर्टिकुलर एरिया वेयर कपल ऑफ कॉर्पोरेट्स आर वर्किंग, अगर वो एक कॉमन कंसोर्शियम पर आ जाए, तो जो आप कॉज आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आई थिंक if the industry bodies should, I think, play a lead role in that, in bringing all those discussions and people together, getting onto a common consensus. कि अगर for example महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं विदर्भा में, तो वहाँ पे जहाँ पानी की इतनी किल्लत है, वहाँ पे prioritization किस तरीके से हो, because many a times there are also lots of reports where CSR has also become a subject of misplaced priorities. तो हमें वो भी देखना चाहिए कि जहाँ पे वहाँ पे हम स्पोर्ट्स करें या फोक डांस को प्रमोट करें या फिर एक्चुअली वाटर क्राइसिस को एड्रेस करें. सो I think these are some of the very contemporary issues where we need more direction. A lot of initiatives have picked up over the years, because I have personally in my previous organizations worked very closely with the Ministry of Social Justice and the National Trust. So a lot of action has happened with the Center for Autism and Cerebral Palsy. In fact, in the hospitalization sector, I feel a lot of jobs have been created along with NSDC and the Skills Ministry. Interestingly, उन्होंने भी बहुत काम किया है. मेंटल हेल्थ में भी, मेंटल डिसेबिलिटी की अगर हम खास तौर से बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, इन सब के लिए डिफाइंड जॉब रोल्स अलॉन्ग विद ट्रेनिंग पे काफ़ी काम हो रहा है. तो आई थिंक जैसा कि हम प्रायोरिटाइजेशन ऑफ CSR एरियाज़ की बात करते हैं, इट इज़ ऑलवेज द decision of a particular corporate कि वो किस एरिया में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. बट आई थिंक कंटिन्यूस डिमांड फ्रॉम द कम्युनिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स, जिसमें अगर बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, इफ़ देर इज़ एनी फार्मा कंपनी और एनी अदर एसोसिएट बिजनेस विच फील्स इट्स वेरी रिलेटेड टू देम एज एन एंसिलरी, तो ये बहुत केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं.